arithmetic progressions. Turn to page number 93. Chapter number 5, arithmetic progressions. Last year, a few questions were deleted from this chapter due to the COVID lockdown. Last exercise, not the optional exercise based on sum of n terms. Some of the questions were deleted, but this time we have no information as yet about any changes in the syllabus. So we will be doing this whole chapter, including the optional exercise. So arithmetic progressions simply states to a sequence of numbers where you have where you are given the first number and the rest of the numbers can be obtained by adding a fixed value to the previous one. For example, here they have just given some patterns from our day-to-day life. The first example here says that Veena applied for a job and she got selected. उसको जॉब की जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो मिली है 8,000 और इसका एनुअल इंक्रीमेंट होगा 500 rupees. So if we had to write down what will be the salary she obtains for consecutive years, starting with the first year. So this is what we have. The first year, she will be getting 8,000 per month. Next year onwards, she will get 8,500 rupees per month, then 9,000, so on. And second example here, the length of the rungs of a ladder decrease uniformly. So ये जो steps है ladder की, इनकी जो length है वो decrease हो रही है. As you can see this shape of the ladder here. तो जो ladder की जो ये जो steps हैं, उनकी length जो है वो 2 centimeters reduce हो रही है uniformly. तो जो first step है उसकी length 45 centimeters है. उसके बाद जो next step होगा, the length reduces by 2 centimeters. It will be 43. Then reduced by 2 further 41. Now these values here are decreasing. ये जो आपके पास sequence of numbers है, the pattern formed here, it follows the rule of decreasing the values by 2. Opposite of the previous one, जहाँ पे values increase हो रही थी. Compare the third example. In a saving schemes, the amount becomes 5/4 of itself every 3 years. The maturity amount of the investment of 8,000. अगर हम 8,000 rupees invest कर रहे हैं तो उन्होंने 3 साल के बाद 5/4 times of itself होना है. तो accordingly अगर calculate किया जाए, इन्होंने rough side आपको यहाँ पे values दी हैं. The first value 5/4 of 8,000 will be 10,000. Then 5/4 of 10,000 will be 12,500 and so on. Now, if you observe these patterns here, let's just take a look at the next page. You're given the number of unit squares in the squares with side 1, 2, 3 units. If you are drawing squares, जिसकी side है 1 unit, उसमें आपको unit squares कितने मिलेंगे? I hope you understand what unit squares are. A unit square is a square with side 1 unit. तो जो पहला square है उसकी side 1 unit है, जो दूसरा square है उसकी side 2 units है. The third square here has side 3 units each. अगर हम इन squares को divide कर दें into 1 unit squares, how many squares do you get? पहले square में आपको एक ही 1 unit square मिलेगा. Second square में आपको 4 1 unit squares मिलेंगे, and they have obtained the sequence in this way. In the third case, it is obtained by 3 square, 9 unit squares, as you can see. It's same as the area of the square itself. अगर square की side 1 unit है, तो उसका area होगा 1 square. That will tell you how many unit squares are there in that square. The simplified values will be 1, 4, 9, so on. Fifth part here, Shakila puts 100 rupees into her daughter's money box where she was 1 year old, and she increases the amount by 50 rupees every year. So starting from very initial age, जो amount saved होगा वो आपका क्या बनेगा? First year 100 rupees save होंगे, next year 150, third year 200, so on.
Looking at these sequence of numbers, there is a pattern these sequence follow. ये जो आपके पास sequences बन रही हैं, ये कुछ pattern follow कर रही हैं. If your sequence follows an arithmetic pattern where certain number may be positive, may be negative, maybe even zero is being added to the previous value to obtain the next one. आपके पास जो पहला sequence था वो ये था 8,000, 8,500, 9,000, जहां पे salary increase हो रही है. This is the sequence of numbers obtained. In the second case, the sequence of the numbers obtained was this. I will just take the fourth example here. This is the I want you to obtain or observe what value is being added to any number to obtain the next one in the sequence. आपके पास यहाँ पे जो लिस्ट बन रही है उसमें से आप कोई भी नंबर चूज कर लो, लिस्ट का कोई भी एक नंबर चूज करो एंड ऑब्जर्व कि उस वैल्यू में हम क्या ऐड करें टू गेट द नेक्स्ट वन. In the first one, if we add 500 to 8,000, we get the next one. Again, adding 500, we get the next value. Adding 500, we get the next value. Adding 500, we will get the next value. So this is the sequence. This is the pattern the sequence follows. Comparing it with the second one, here, if we decrease the values by 2, then we can obtain the next number. The decrease of any value by 2 can also be written as increase by negative. Do you agree? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. What about the third sequence here? The third list of numbers here. We add 3 to the first number, we get the next value. Then we add 5 to the next number, we get the next one. Then adding 7. Now this does not happen to be an arithmetic progression. अगर आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें आप सेम वैल्यू ऐड करके नेक्स्ट नंबर पे पहुंच सकते हो, तो वो जो लिस्ट होगी आपकी उसको आप बोलोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अदरवाइज इट विल नॉट बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. द नंबर दैट वी आर एडिंग टू द करंट वैल्यू to get the next one in the sequence or in the list could be a positive value, could be a negative value, it could even be zero. Here are a few examples. यहाँ पे उन्होंने list of numbers दी है. First one, आपका जो natural numbers का जो sequence, that is an arithmetic progression. Adding 1 to any of the numbers, you can obtain the next one. अगर आपको sequence complete करना है. And this sequence here is infinite. Last के जो dashes हैं, वो indicate कर रहे हैं that this is going on and on. Second list of numbers 100, 70, 40, 10 यूनिफॉर्मली ये रिड्यूस हो रहे हैं by 30. यहाँ पे जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो है -30. यहाँ पे +1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे -30 ऐड हो रहा है. सिंपली बोल सकते हो रिड्यूस हो रहे हैं by 30, बट वी आर लुकिंग फॉर चेंज इन द वैल्यूज इन सक्सेसिव वे. सो हम एडिशन बोलेंगे, और अगर आपकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, देयर इज अ पॉजिटिव नंबर बीइंग एडेड. अगर आपकी वैल्यूज रिड्यूस हो रही हैं, वी विल से अ नेगेटिव वैल्यू इज बीइंग एडेड. And if there is no change, then we will say that 0 is being added, as in fourth part. यहाँ पे हमारा सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा, पूरी लिस्ट 3 की बनी हुई है, तो यहाँ पे 0 ऐड होगा. किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे आपको नेक्स्ट मिल जाएगा. थोड़ा सा ये केयरफुल रहना है यहाँ पे. जो आपकी पहली वैल्यू है इस लिस्ट की, उसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे. जो ये हम नंबर ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट वन, इट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. The word common difference comes from the difference between two consecutive values. आप अपने इस लिस्ट में कोई भी 2 consecutive values को पिक करो, succeeding value में से preceding को माइनस करना है always to obtain the common difference. The general way in which you can denote an arithmetic progression is A1, A representing your terms, and subscript 1 representing first term. The subscript will indicate which term we are referring to. A1, A2, A3, so on. So you will have this type of general representation.
If you have to find out the common difference, always take two consecutive terms succeeding minus the preceding one. So if we take the first two terms, common difference will be a2 minus a1. सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है. अगर आप सेकेंड और थर्ड टर्म लेते हो तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा आपको बाय राइटिंग a3 minus a2. At any given point, if you are writing down the common difference, always write down the difference by taking the succeeding term first minus the preceding term. The answer could be positive, it could be negative, or it could even be zero. Here they have just given a description के जो आपको ये 5 list of numbers ऊपर दिए थे, इनमें आपको जो succeeding term है वो कैसे मिल रही है. फर्स्ट पार्ट में 1 ऐड हो रहा है, सेकेंड में -30 ऐड हो रहा है बिकॉज वैल्यूज रिड्यूस हो रही हैं. थर्ड पार्ट में 1 ऐड हो रहा है, फोर्थ पार्ट में we have -3 plus 1, sorry, third part plus 1, fourth part we are adding 0 or subtracting 0. 0 has no sign, so you can simply say it's adding 0. Fifth part, you can say that we are adding -0.5, as I told you earlier. अगर आपकी वैल्यूज कम हो रही हैं तो हम उसको नेगेटिव वैल्यू की एडिशन से लिखें. यहाँ पे उन्होंने सिंपल आपको बताया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपको डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा. I will be using the acronym AP furthermore, जहाँ पे भी हमें ये वर्ड को यूज करना होगा. Arithmetic progression simply is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. आपके पास list of numbers है, आपको उस list में अगर कोई भी value obtain करनी है, there is a value which can be added to the previous one. For example, आपके पास roll numbers हैं आपकी class के, तो one can be added to the roll number to obtain the next one. Or if you take the list of even numbers, if you are given any even number, you want to obtain the next one, you know you have to add 2. Same is the case with the list of odd numbers. आप अगर multiples लिख रहे हो किसी number, for example, if you're writing down the multiples of 10, what number will be added to write down the next one in the list by adding 10? So वो जो हम number add कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं common difference. जो ये fixed number add हो रहा है इसको बोलना है common difference. This common difference will be represented by lowercase d, and this can be positive, negative, or even 0. अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, आपके पास जो लिस्ट बनेगी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. अगर आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो लिस्ट जो होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. और अगर आपका कॉमन डिफरेंस 0 है तो सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो सेम होंगी. All the values in the list will be referred to as terms of the sequence. The general representation is this, and if I had to write down with the help of common difference, A1 can be written as simply A. A2 can be obtained by adding the common difference to A1. So this here, मैंने क्या किया है? मैंने किया है add the common difference to the previous term. Keep in mind, ये common difference positive हो सकता है, negative हो सकता है, 0 भी हो सकता है. If I had to obtain A3, I will add the common difference to the second term. थर्ड टर्म पे जाना है तो सेकेंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे. फोर्थ टर्म पे अगर आपको जाना है तो थर्ड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे. सो ऑन एंड सो फॉर्थ. दिस लिस्ट ऑफ सीक्वेंस, ये जो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, दिस कुड बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. कोई रूल नहीं है फिक्स्ड कि ये हमेशा ही इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा. इट कुड बी इनफाइनाइट एज वेल. There are two ways. This is the general form. A plus D, A plus 2D, A plus 3D. इन्होंने इस तरह से obtain किया है. Generalize करें अगर हम इस चीज को. Just observe, हमारी जो first term थी, हमने उसको A1 लिखा था, उसकी वैल्यू हम simply A लिख सकते हैं. सेकेंड वैल्यू जो हमें मिली, that is A1 plus D. कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया हमने प्रीवियस टर्म में. जब हमने थर्ड टर्म ऑब्टेन की है, इट विल बी ऑब्टेन्ड जब हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे सेकेंड टर्म में. इसमें अगर आप A2 की वैल्यू यूज करते हो, यूज द वैल्यू ऑफ A2, दिस विल बी A1 प्लस D प्लस D. So this is A1 plus 2D. A1 actually is A plus 2D. इस तरह से उन्होंने जनरल फॉर्म ऑब्टेन की. What about A4? यहाँ पे आप A3 की वैल्यू यूज कर सकते हो. अभी जो आपने ऑब्टेन की है A plus 2D plus D. And this will be A plus 3D.
following this pattern, you can see any term. अगर हम 7th term लिखेंगे, it will have the first term plus 6 times the common difference. जो common difference होगा, it will always be one less than the term we are writing down. अगर आप 7th term लिख रहे हो, उसका एक portion जो होगा वो आपको first term से मिलेगा. जो second portion होगा, it will be obtained by multiplying the common difference with one value less than the term you're writing down. अगर आप लिख रहे हो 10th term, observe the sequence and then just observe the pattern and then just write down. This will be a plus 90. इसको अगर हम generalize करें, कोई भी आपको position है, अगर आपको nth place पे बताना है कि कौन सी टर्म आएगी, nth place पे कौन सी टर्म आएगी, a plus n minus d, a plus n minus 1, a plus n minus 1 times d. So your first exercise is actually based on a general observation and understanding what arithmetic progression is. उसके बाद हम आगे काम करेंगे. ये वाला जो चैप्टर है, most of it is based on formula. आपके पास later on sum of the terms का formula है जिसकी derivation आपके syllabus में है. In case you have done that, please do that. So first question पे हम बाद में आएंगे. Let's leave it for the moment here. Second question, write the first 4 terms of the AP when the first term, which is denoted by A, and the common difference denoted by D is given. आपको sequence की पहली term दी हुई है, common difference दिया हुआ है, आपको list बनानी है सिर्फ 4 terms. तो आपकी जो पहली term बनेगी वो तो simply A के equal होगी, that will be 10. Then second term, अगर आप बिल्कुल easiest way में लिखना चाहते हो, simplest way में लिखना चाहते हो, तो हम अब एक एक करके ना common difference add करते जाएंगे. एक तरीका ये है. Or you can always use the formula an equals to a plus n minus 1 times d. ये हम मोस्टली तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक टर्म के बारे में बात करनी हो. अगर आप पूरा का पूरा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हो तो हम अपनी जनरल जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करेंगे. पहली टर्म आपकी 10 है, अगली टर्म मिलेगी, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे आप. कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है 10. यूज द वैल्यूज ऑफ and the common difference. This will be 20. A3, it will be 20 plus 10. 30. Fourth term will be 30 plus 10. 30 plus 10, 40. This is what you need to do in this question. आपको पहली term बताइए, common difference add करते जाओ, and if you don't want, you don't have to write all this in detail. You can simply give the list. आप simply अपना आंसर भी दे सकते हो. Second part में अगर आप -2 से शुरू कर रहे हो, आपका पहला जो term है लिस्ट का वो -2 है, कॉमन डिफरेंस इज 0, आपको 0 ऐड करना है. The second will be -2, the third will be -2, the fourth will be -2. What do you think about fifth part? You are starting with negative 1.25 and you have to add negative 0.25. This is your first term. What will be the second term? 1.5 minus 1.5. Minus 1.5. First term, add the common difference. Again, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो. A3 will be equal to minus 1.75. A4 will be equal to negative 2. I hope this is clear. I'll just leave it here and we will continue the rest of the work. I will be sharing a couple of definitions with you. I would like you to write that down, but not now. I could not bring that with me. I'm in school at the moment. So when I get back home, I will share that work with you. It's just a few definitions. Then you can write that down in the notebooks before we start with the exercise. I'll see you all tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.